costed an arm and leg for my parents. I burnt the midnight oil. Listen to this simple answer very, very carefully and attentively. One of the most challenging yet rewarding experience that I now, if you also want to improve your speaking and want to score 8 plus in your IELTS speaking, then you must follow this particular pattern for IELTS speaking part 2 cue cards. Now, listen to this simple answer very, very carefully and attentively. So everyone have to face lots of struggles, lots of ups and downs while accomplishing their dreams, goals and success. One of the most challenging yet rewarding experiences for me was learning a French language. It started around 2 years ago when I decided to enroll myself for an intensive French learning course after my graduation. At that moment, I was motivated by both personal and professional reasons. Personally, I was fascinated about learning French language and other cultures. And professionally, I knew that learning a French language could be a valuable asset for my career. So my classes were held every day at a local French institute for 3 hours daily with additional homework, practice sessions, and many more things. So not only this, I also joined some French speaking meetups and also watch French movies with subtitles to immerse myself more into learning. One of my teachers also suggested me to download and learn from the Duolingo application, which is learning language with a fun. So after 1 year of rigorous struggle and hard work, I was able to hold a conversation for around 30 minutes continuously in French, and that was seriously and immensely very fascinating experience for me. Initially, it was very difficult for me to handle the pronunciations and the complex rules of grammar. At start, I was also frustrated sometimes, but with persistence, guidance, sessions and help supportive environment of the instructors of my institute, I was able to improve. So after the year of rigorous improvement, rigorous hard work, I was able to hold the conversations in French with the native French speakers as well. This was a really proud moment for me. I felt a profound sense of achievement and success. I not only gained a valuable skill, I also made new friends and gained knowledge about another culture. So this was a difficult thing that I have ever had in my life, that I have ever did in my life, and I am quite successful and I'm proud of my achievement. So this is how आपने 8 band का sample cue card किस तरीके से बोलना है. So here is the 5 band speaking sample answer. The question is in front of. So the question is, describe a difficult thing that you did and you were successful. So there are many times when we have to do difficult things, but here I would like to talk about a difficult thing that I did and I is successful. Basically, it was learning a language that I always wanted. No, that I always want to learn. It is learning French language. I started this course 2 years ago, and my parents had to. The cost of this fees, the fees of this course costed an arm and leg for my parents. After I get admission in the French language course, I burned the midnight oil. I burned the midnight oil to complete my course, but I was unable to crack for an year. But then also I tried again and again and again. I tried a lot, but it was not a piece of cake for me. But with my continuous efforts, I was able to complete this course after 1 year, and my parents felt very proud of me. So this was the moment when I felt over the moon. Okay. So this is the time when I did the difficult thing, and it was difficult, but I did it very efficiently and effectively. 5 बैंड का अभी क्यू कार्ड आपने सुना एंड 8 बैंड का भी क्यू कार्ड सुना, तो इन दोनों में अब डिफरेंसेस क्या थे? पहला डिफरेंस था कि आपने 5 बैंड में 3 से 4 वैसे इडियम्स यूज करे जो आपको यूज करना अलाउड ही नहीं है. अगर आप आईडीपी की ऑफिशियल साइट खोल के देखोगे या अगर आप बैंड डिस्क्रिप्टर्स को भी पढ़ते हो, तो कभी भी कहीं भी ये नहीं मेंशन किया गया आज तक कि यू हैव टू यूज इडियम्स इन योर स्पीकिंग क्यू कार्ड.
Yes, you can use idiom, that only one, और वो भी आपने idioms वो यूज करने हैं जो आपके सूट होते हैं in that क्यू कार्ड। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप यूज कर सकते थे, लर्निंग अ फ्रेंच लैंग्वेज वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक, वॉज अ टफ नट टू क्रैक, आप ये चीजें यूज कर सकते थे, राइट। तो आपको अगर आप इडियम यूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कौन सा करना है आपने, कौन सा इडियम यूज नहीं करना। बट ऑल इन ऑल आई ऑलवेज अपने स्टूडेंट्स को मैं हमेशा मना करती हूँ कि इडियम्स आपने यूज नहीं करने। ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा फ्रेजल लैंग्वेज, फ्रेजल वर्ब्स आप अपने इंक्लूड कर सकते हो अपने क्यू कार्ड में। दिस वाज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड फर्स्ट मेन पॉइंट। लेट्स मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मेरी एक स्टूडेंट रिसेंटली शी हैव एनरोल्ड इन माय ऑनलाइन क्रैश कोर्स फॉर एकेडमिक। उन्होंने मुझे बताया कि उनके 5 बैंड आई स्पीकिंग में। उन्होंने कहा कि मेरी फ्लुएंसी बहुत बढ़िया थी, मैंने 3 से 4 इडियम्स यूज करे ऐसे। तो जब मैंने उनसे स्पीकिंग सुनी तो उन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बोला जैसे मैंने अभी आपको बोला कि 5 बैंड वाले स्टूडेंट्स कैसे बोलते हैं। तो इसीलिए कभी भी आईडीपी में ये नहीं मेंशन था कि आपने इडियम्स को यूज करना है, तो उस स्टूडेंट ने इडियम्स यूज करे, इसीलिए उसके 4.5 बैंड्स आए इन स्पीकिंग क्यू कार्ड डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी गुड फ्लुएंसी। Apart from this, second main important point to note here is that fluency, को आपने कम करना है। अगर आपने को कम नहीं किया तो आपके बैंड 6 नहीं आएंगे, 5.5 तक ही आएंगे। सो प्रैक्टिस, इसको इंप्रूव करने का एक ही सोल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। पॉसिबल है तो 3-4 बार सिंगल क्यू कार्ड को बार बार बोल के देखो। पॉसिबल है, अगर आपको आइडियाज नहीं आते, फ्लुएंसी ब्रेक क्यों होती है? क्योंकि आपके पास आइडियाज नहीं आते। थर्ड मेन पॉइंट, आइडियाज कैसे आएंगे? ट्राई टू एक्सप्लेन द रैंडम टॉपिक्स, ट्राई टू स्पीक अबाउट द रैंडम टॉपिक। सपोज अगर आप कहीं कोचिंग नहीं जा रहे हो तो रास्ते में अगर आपने बाइक देख ली उसको कर लो एक्सप्लेन, अगर आपने कोई ट्री देख लिया उसको करो एक्सप्लेन, अगर आपने कोई पार्क देख लिया उसको करो एक्सप्लेन, अगर आपने कोई ग्रुप ऑफ पीपल देख लिया उसको करो एक्सप्लेन। तो इससे आपकी आइडिया जनरेशन भी आएगी। अगर आप उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी फ्लुएंसी भी बढ़ेगी। उसके बाद थर्ड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी अपनी गलतियों को इंप्रूव मत करो। अगर आपको पता चल गया कि आपने सेंटेंसेस को कभी भी अपने सेंटेंसेस को चेंज मत करो। जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला the cost of this fees, it costed arm and leg, मतलब आपने कितनी फ्लुएंसी ब्रेक करी और अपना सेंटेंस चेंज करा। एक तो सेंटेंस चेंज करने से फ्लुएंसी भी ब्रेक होती है और आपका सेंटेंस चेंज करने से सारा कुछ बैंड भी आपके, यू विल एंड अप लूजिंग योर बैंड्स। तो ये थी 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने माइंड में रखनी है। एक और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू कंसीडर इज दैट हमेशा अपने क्यू कार्ड को लॉजिकल मैनर से ऑर्गेनाइज करो। जब मैंने वो अपनी स्टूडेंट से एक क्यू कार्ड फॉर डेमो सुना तो उन्होंने क्यू कार्ड जस्ट रैंडम बोल दिया, कोई फॉर्मेट नहीं था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी उनकी, कोई पैटर्न नहीं था उन्होंने इवन कोई भी क्यू पॉइंट को भी उन्होंने कवर नहीं किया। जस्ट शी हैड एन आइडिया इन हर माइंड, जो उसके माइंड में आ गया उन्होंने वो क्यू कार्ड को बोल दिया, रैंडमली ऐसे ही बोल दिया। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो क्यू कार्ड है वो एक पैटर्न में लॉजिकली ऑर्गेनाइज होना चाहिए एंड उसमें आपकी फ्लुएंसी ब्रेक नहीं होती। सारे के सारे क्यू पॉइंट्स कवर करने उसमें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सो ये सारी चीजों को आपने ध्यान में रखना है। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। I upload videos every day which will be very informative and useful for you. And अगर आपको ये नहीं पता कि क्यू कार्ड किस मेथड से आपने फ्रेम करना है, क्यू कार्ड का ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट क्या है, पैटर्न क्या है, तो ये वीडियोस विद सैंपल आंसर्स आपके सामने हैं। मस्ट वॉच दीज वीडियोस। सो दीज वीडियोस आर फॉर बोथ एकेडमिक एज वेल एज फॉर जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इंफॉर्मेटिव लगा हो, then do give it a thumbs up and share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel if you are new to my channel. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very very best for your IELTS preparation.